Assalamu alaikum students, welcome all of you in the class. In today's class, we'll discuss another type of literary device or skill, which is allegory. So, allegory is actually the description of a subject in the guise of another subject. यानी कि जो ये allegory है, ये suggest करता है hidden meaning via the use of metaphoric examples. जैसे कि for example, like you see in the visual, faith is like a stony uphill climb. A single stumble might send you sprawling, but belief and steadfastness will see you to the very top. So, allegories जो हैं, they can be understood to be a type of extended metaphor. An extended metaphor जो है that develops a certain analogy to a greater extent than a simple comparison. वो सिर्फ जो एक्सटेंडेड मेटाफर होता है वो सिर्फ कंपैरिजन तक ही नहीं महदूद होता है, बल्कि वो एक एनालॉगी क्रिएट करता है. सो एलिगरी जो है मीनवाइल यूजेस अ पर्टिकुलर मेटाफर थ्रू आउट एन एंटायर प्लॉट. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे द टॉर्टोइज एंड द हेयर है फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स, and from this story we learn actually the strong and steady wins the race. तो हेयर इज़ दिस एलिगरी जो है यहाँ पे बनी है इस स्टोरी में, तो इट सजेस्ट्स अ हिडन मीनिंग बाय यूजिंग दीज मेटाफोरिक एग्जाम्पल. सो इट्स एक्चुअली अ डिवाइस वेयर द मीनिंग ऑफ ग्रेटर often abstract moral या political concept जो है that is to be conveyed with the help of more material objects. All right. Another example is like for example the story of Icarus. Icarus जो है वो काव करता है अपने लिए एक फैशन विंग्स फॉर हिमसेल्फ जो कि वैक्स से बने होते हैं. बट व्हेन ही फ्लाइज टू क्लोज टू द सन इट्स विंग्स मेल्ट. So this story is actually a message about the dangers of reaching beyond our powers. So hence it's a story or a picture with a hidden meaning. तो यही जो है यही सब एलिगरी में देखा जाता है. एंड द कैरेक्टर्स जो होते हैं एलिगरी के, दे आर एक्चुअली द सिम्बल्स विच रिप्रेजेंट पर्टिकुलर आइडियाज़. सो इट्स नॉट अ लिटरल वन, इट हैज़ अ फिगरेटिव मीनिंग. ये आप याद रखें. फॉर एग्जांपल जो सरफेस स्टोरी है वो चाहे इट्स अबाउट टू नेबर्स हु आर थ्रोइंग रॉक्स एट ईच अदर्स होम्स, but the hidden story would be about a war between countries. Hence जो allegory का purpose होता है वो illustrate करना होता है moral और a spiritual both, या फिर political भी आप ले सकते हैं, historical situations भी. So this allegory जो है it's actually a form of art जहाँ पे कि आपको पिक्चर that it be a picture or a story which gives its meaning through using symbols. या many people would consider allegory to be an extended type of metaphor जो कि मैंने आपको explain किया हुआ है कि वो क्या होता है. So when used as a literary device, जो allegory है writer असल में convey करना चाहता है एक message, चाहे वो मॉरल मैसेज हो या हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी मैसेज जो है वो असल में पॉइंट यही कन्वे करना चाहता है. एंड बाय यूजिंग दिस लिटरेरी डिवाइस. सो एलिगरी जो है इट्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड and is translated implying something that further helps us to understand its functions. जो कि मीनिंग जो हम ऑथर जो हमें समझाना चाहता है उसके बियॉन्ड भी वो यूज़ कर सकते हैं. So when used as a form of figurative language, the allegory can make a useful in addition to things such as motivational speeches में काम आता है, या informative speeches में, या किसी भी स्पोकन लेसन में. सो इन कन्वर्सेशन एलिगरी जो है दैट इज़ यूज्ड इन अ स्पीच, जो कि बहुत सारे मतलब फेमस जो पोइट्स हैं या फेमस पॉलिटिशियंस हैं, दे यूज़ बिट ऑफ एलिगरी इन देयर स्पीच जस्ट टू मेक इट मोर, जिसको हम बोलते हैं एम्फसाइजिंग, और जिसको हम बोलते हैं कि मोर इन्फ्लुएंसिंग, okay, to reach to the readers or to reach to the public.
और लिटरेचर में भी ये बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह में यूज़ होता है, या स्टोरीज़ में यूज़ होता है, या हमारे जो राइटर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं टू कन्वे अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज टू द ऑडियंस. सो आई होप इट्स एलिगरी जो है ये आपको क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन to another type of literary device, which is personification. Now, personification is a specific type of metaphor, you can say. या इट्स जनरली वो लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे कि हम असाइन करते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्ट्स या कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को. लाइक इन दिस पिक्चर द विंड yells while blowing. So we know that wind cannot yell, only a living thing can yell, yani चीखना. So here we personify wind as a human who yells out very loudly while blowing. Like there are further examples, that bottle of wine is calling my name. So the bottle of wine जो है is calling a name. Usually who calls the name? Humans. So this bottle of wine जो है इसको attribute दिया गया है humans का, that he is saying something. Similarly, the sun is smiling on us today. Sun don't smile, but here we are personifying the sun. And my computer stubbornly refused to start. The sofa is looking at me invitingly. The rain is dancing on the roof. So these are all examples of personification, where we give or where we use a specific type of metaphor or give qualities of humans to non-humans or inanimate objects. In other words, we can say it's a common form of metaphor in that human characteristics जो हैं उनको attribute किया गया to non-human things. So this allows the writers to create life असल में, और emotion या motion within an inanimate object जो कि कभी हो नहीं सकती है, या animals में या even abstract ideas में, by assigning them recognizable human behaviors and emotions. तो असल में जो ऑथर का मोटिव होता है इसके पीछे वो यही होता है, टू गिव लाइफ टू inanimate objects or non-living objects. So, this personification is a literary device which is often found in children's literature mostly. So, this is an effective use of figurative language because personifications जो है personification it relies on imagination for understanding. Of course, जो readers होते हैं though they are at a logical level that non-human things जो हैं वो they cannot feel, they cannot behave or think like humans, they know. But however, personifying non-human things can be an interesting, creative and effective way for a writer to illustrate a concept or make a point. For example, जो हम देखते हैं like the Day of Crayons, एक बुक है, पिक्चर बुक है. इसमें जो है ऑथर ने ड्रू डेविड जो उनका ऑथर है उसने पर्सोनिफाई किया है टू एलो क्रेयंस मीन्स कलर्स, वैक्स कलर्स. तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं देयर फ्रस्ट्रेशन एट हाउ दे आर नॉट बीइंग यूज्ड. So this literary device is effective in creating an imaginary world, especially for children, in which crayons can communicate like humans. Like, for example, I want to get money, but the ATM died, or the sunflowers hung their heads, or that door jumped in my way. Or in the visual, the window winked at me. However, we know that window never winks, neither it winks nor it moves even. But when we personify the thing, so it becomes alive. So it's all about creating imagery or a connection between animate and inanimate for readers. Therefore, जो personification है ये हमें ये writers को allow करता है to convey meaning in a creative and poetic way. Hopefully आपको ये personification भी clear होगा, and I hope आप घर पर इन सारे literary devices को पढ़ते होंगे और revise करते होंगे such that they would help you out some way or the other, hopefully, inshallah. See you in the next class. Till then, take care and Allah Hafiz.